here on The Burning Question, and I'm Deepthi Sachdeva. Remember, not the very first time that we are getting this story to you. Women in politics, do they have it easy? Some believe that there are ulterior motives that they actually hand out to women, member of parliaments, women netas who work their way up hard. But why are women treated like commodities? And why is that our netas do not respect women who work from the ranks and also who have a name for themselves in politics? Or is it because Smriti Irani has defeated Rahul Gandhi that you have a comment like that? That's the story that we'll bring up on this edition of The Burning Question. First up, the headlines. Rahul Gandhi looks down upon the Hindi language. He says English is more important. स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। The Congress launching that sexist attack on Smriti Irani by making that latke jhatke comment. They want us not to entangle with the proceedings. They want our assembly should not take place. Terrorist backer Congress is opposing Savarkar portrait in the Karnataka Assembly. छोड़िए अब छोड़िए ये पुरानी बातें हैं ये तो सच्चाई क्या है पॉलिटिक्स क्या है The 1984 riot-linked titler will be a part of Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra. He calls the riot allegations quote-unquote old issues. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. The External Affairs Minister gives it back to Rahul Gandhi for his pitai comment of the Indian Army. And the Himanta government runs bulldozers against illegal encroachments in Assam. About 100 bighas are free. His name, ladies and gentlemen, is Ajay Rai. He is a senior Congress neta, said to be very close to Priyanka Gandhi, also to Rahul Gandhi, at a point where, remember, Priyanka Gandhi, when she was campaigning in Uttar Pradesh, and she had actually raised that entire pitch of ladki hoon, lad sakti hoon. But what happens when a ladki or a woman really fights her way into politics? When she rises from the ranks to the top, someone like a Smriti Irani. She has a past, but today she's a union minister. Not just that, she has defeated Rahul Gandhi in his own bastion of Amethi. Now, does it mean that the Congress has not been able to digest that defeat? The reason why today you have a neta from the Congress party who makes an extremely misogynist and a crass comment against the union minister. When he's asked by Republic, that is he willing to apologize or take his comments back, he said absolutely not. So is Priyanka Gandhi today endorsing this comment? Smriti Irani though has hit back. Let's play out the entire story first up and then we debate. It's been 3 years since Union Minister Smriti Irani created history by defeating Rahul Gandhi in Amethi and conquering the Congress bastion of nearly 4 decades. Looks like the grand old party cannot gulp down the fact that Smriti Irani defeated them in their bastion. The evidence of this was clear today when Congress leader Ajay Rai passed a misogynistic remark against the union minister. स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं।
वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े। Not just this, when confronted, he refused to apologize. बिल्कुल आप माफी नहीं मांगेंगे? मैं कहा है कि भाई कोई गलती करेंगे तब तो माफी मांगेंगे। गलती कुछ किया है नहीं। आप कभी डिक्शनरी उठाकर देख ले कि लड़के झटके में अगर कहीं मतलब आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये राजनीतिक अभद्रता है कि एक महिला मंत्री जो अपनी काबिलियत से आपके नेता राहुल गांधी को हरा के अमेठी की सांसद हैं, उनको ये बोलना कि वो लटके झटके करती हैं? थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? The BJP meanwhile has slammed the mindset of the Congress party, calling the remarks sexist. It is to be noted that none of the senior Congress party leaders have condemned the remark. So does that signify that Congress endorses the same mindset? That's the burning question tonight. So that is how the entire story has panned out. We have a panel of guests joining us, and let me quickly introduce them, and we'll also in fact fire that tweet that has come in from the Twitter handle of Smriti Irani, who's responded to that entire controversy. I'm saying good evening to Rajalakshmi Joshi, who's a blogger and an activist with us from Mumbai. Sumitra Goenka is also a policy and political analyst. Huda Zariwala is a political analyst. She leans towards the Aam Aadmi Party. Dushyant Nagar is a political analyst and he is leaning towards the AAP. Dushyant, my first question will be for you. Smriti Irani ये कहती है, सुना है राहुल गांधी जी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है. Then she goes on to say, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं. And in a footnote she says, you and Mummy ji needs to get your misogynist goons a new speech writer. दुष्यंत नागर जी, मतलब कोई महिला राजनीति में आती है और वो महिला अगर स्मृति ईरानी हो और अगर वो महिला राहुल गांधी को हरा दे तो क्या इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा? दुष्यंत, देखिए, हार जीत का कोई बड़ी चीज नहीं होती. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चुनाव हारे, अटल बिहारी वाजपेयी अनेक चुनाव हारे. तो पहले आप इस चीज को अलग अरे चलिए नहीं दुष्यंत नागर जी, देखिए नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट डिबेट है दुष्यंत. आप और मैं दोनों जानते हैं कि महिलाओं को राजनीति में समय समय पर टारगेट किया गया, तो इसलिए आज भीमराव अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, इनकी बात मत करिए. राहुल गांधी कोई मार्टर नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है. नहीं दुष्यंत बात पर आइए. अजय राय कहते हैं कि लटके झटके देकर स्मृति ईरानी चली जाती है, इसका क्या मतलब है? हम अपना डिस्कनेक्ट करके उड़ जाते हैं, तो हमें दुष्यंत नागर, क्या आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से माफी मांग रहे हैं, अजय राय की तरफ से माफी मांग रहे हैं? आप हमें समय दीजिए बोलने का, अदरवाइज हम हट जाते हैं. सीधी बात. लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिएगा. नहीं, आप सवाल का जवाब हम तब देंगे जब आप हमें बोलने देंगे. आप बोलने नहीं दे रही हैं, ये गलत है. आप बुला के हमारा अपमान कर रही हैं. दूसरी बात, आपने पूरी कांग्रेस पार्टी को लपेटा. अच्छा, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी में कितना महिला अध्यक्ष हुए हैं? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी. अरे नहीं दुष्यंत, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हमारी टीम ने पूरे बयान दिखाए हैं, हमारी टीम ने वो पूरे कमेंट्स दिखाए हैं. दुष्यंत देखिए, इस डिबेट को मत भटकाइए. और ये बैठकर जो आप ये लोग आरोप लगाते हैं ना कि बोलने नहीं दिया जाता, मैंने सबसे पहला सवाल आप ही से किया. दुष्यंत प्लीज, मैं भी हाथ जोड़ सकती हूँ. जवाब कैसे दे पाऊंगा? देखिए, बहुत हो गया ये नेताओं का. नहीं दुष्यंत, मुझे ये बताइए कि अजय राय ने जो कमेंट किया है स्मृति ईरानी को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? जवाब देने दीजिए. देखिए, लोकतंत्र में बहन स्मृति भी जीत सकती हैं, राहुल जी भी जीत सकते हैं. ये तो अमेठी की जनता तय करेगी. चुनाव कहां से लड़ना, कहां से नहीं लड़ना है, ये प्रत्येक व्यक्ति का एक विशेष अधिकार है. राहुल गांधी जी तय करेंगे उन्हें वायनाड के साथ में क्या अमेठी से भी लड़ना है अथवा राज्य या देश के किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र से लड़ना. रही बात अजय राय जी की,
बिल्कुल अजय राय जी के जो शब्द हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कोई बात कही है, नहीं कहनी चाहिए। महिलाएं किसी भी दल से हैं, किसी भी विचारधारा से, हमारे पक्ष में है, विपक्ष में है, हमें सदैव अपने शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके प्रति कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी माता बहनें जो राजनीति में आके देश की सेवा कर रही है, बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में होना जरूरी है। महिलाएं जिस संवेदनशीलता से लोगों के प्रति डिवोटेड होती है, प्रतिबद्ध होती है अपने काम के प्रति, वो हमने अनेक उदाहरण देखे। कितनी महिला मंत्रियों ने, महिला नेत्रियों ने देश में, समाज में अच्छे कार्य किए। उनका वात्सल्य, ममता जो लोगों के प्रति, युवाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति है, वो उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि महिलाएं राजनीति में आने के प्रति किसी भी तरह से डिमोटिवेट हो। हमें सदैव उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है। ये दल से ऊपर उठ के, और कांग्रेस पार्टी तो 33% महिलाओं का आरक्षण की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बता दें, राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो चुका है, लोकसभा में कब पास कराएंगे? अगर महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की इतनी ही संवेदनशीलता है और महिलाओं अगर आपकी परमिशन हो, आपकी अब परमिशन हो, आपने अपनी स्पीच पूरी कर ली हो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। महिला विधेयक पास हो रहा है, लेकिन भाजपा घड़ियाली आंसू बहाती है, दिखावा। अरे इतना गुस्सा आपको अजय राय के कमेंट में नहीं आया? प्रियंका गांधी कहती है उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड ना, दुष्यंत दुष्यंत मेरी बात सुनिए। इसके बाद मैं सुमित्रा और हुडा सरीवाला और मिस जोशी को लाऊंगी। प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो अजय राय ने तो दिखा दिया कि भाई मैं लड़का हूं, आदमी हूं, तो गाली दे सकता हूं। आपने एक्शन क्यों नहीं लिया उनके खिलाफ? देखिए, हर व्यक्ति का अपना निजी राय है। आप अजय राय की आवाज को पूरे दल की आवाज, ये निजी राय कैसे हो सकती है भाई साहब? ये निजी राय कैसे हो सकती है? आपने मजाक बना रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी क्यों अजय राय क्यों देंगे? बात करती है। नहीं, मुझे ये बताइए, अब प्रियंका गांधी को ये सुनाई नहीं दे रहा, या राहुल गांधी को सुनाई नहीं दे रहा, सोनिया गांधी को दिखाई नहीं दे रहा। आप भी क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, यहाँ आकर बोल देते हैं निजी राय है। राज्यसभा में जाना चाहिए इनको। आप लोगों के ये कॉमेंट्स हो तो निजी राय हो जाती है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की जब ये भाषा होती है तो आप सड़कों पर उतर आते हैं। नहीं, सुमित्रा, दुष्यंत आपसे आखिर में पूछूंगी, माफी मांगेंगे अजय राय के उस बयान पर? माफी मांगेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक महिला विधेयक को पास नहीं किया लोकसभा में, भाजपा के लोग माफी मांगेंगे? महिलाओं के प्रतिनिधित्व को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी। यही आपको लगता है दुष्यंत लोग ये देख नहीं रहे क्या? कोई तो रीजन होगा ना कि कांग्रेस पार्टी की इस तरह की हालत है। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखावे की, अरे आप तो बच के पता नहीं कहां निकले हुए हैं। नहीं, लेट्स हैव सुमित्रा। Dipti, I it's all think normal. If you are a woman in politics, you will have to go through this. Dipti, I think in every field it is difficult for a woman, and especially if you are in politics, then it is all the more difficult. See, let me start with a positive thing by saying that India is perhaps one of those countries which has seen a woman prime minister, a woman president. We have seen women chief ministers, women who have occupied important positions, not just in politics, but every sphere of life. Okay, Supreme Court has judges which are women. But I think still these kind of comments which come from political parties really, demeaning a woman who has defeated somebody in a democratic way. This lady, Mrs. Irani, she has come up the hard way. She has fought an election and she has definitely broken the glass ceiling by becoming a cabinet minister at a very young age, that too coming from with no political background, no family support. Like mostly, these positions are hard to get if you look at the ground realities.
and she has won due to her work, because we have a democracy in which she has got elected as a public representative. People have voted for her. She has worked hard to get elected. In the sense, people have bestowed the confidence in her. She has taken over Mr. Rahul Gandhi, who is a dynast, who has been a member of parliament from that area for many years. But having said that, this is something which is really not acceptable. We have earlier also seen during the election of our president, Srimati Draupadi Murmu ji, how Mr. Adhir Ranjan Chaudhary, again from Congress, had used a comment, a very derogatory comment inside the parliament. He had called her as Rashtra Patni, and But he was Sumitra, not you know, apologizing for a Sumitra, long time. there is a long list. There is a long list Yes. in these comments. Before I go to Huda Zariwala, Ms. Joshi, why don't you tell me that there has been no action? Because we begin to normalize these comments, parties will begin to distance themselves and they will say, we have nothing to do with this. It's a comment made in personal apologizing capacity. is not enough. So I is that think. the We reason have why, to Ms. move Joshi, beyond they that. always get away with this? But there has to be action. That's exactly what I'm saying. Unless there is action, Huda Zariwala, unless there is action, all this will become normal. Absolutely. Absolutely. I mean, this comment, regardless of whatever party Smriti Irani ji represents, it is to be condemned. I mean, I do not support the BJP by any stretch of imagination. But the fact that this is a woman in question against whom a derogatory remark has been used needs to be condemned. But then again, that being said, let us not forget the kind of derogatory misogynist comments that even the BJP has passed against, the leaders of the non-BJP parties time and again. For instance, Atishi ji, when she was contesting, I mean, we all remember what Gautam Gambhir ji had, commented against her. That was extremely, highly to be condemned. None of the BJP leaders came forward and condemned openly those remarks. So let us not forget that the BJP does not also fall short. Ms. Huda Zariwala, exactly my problem. Because the moment I'll ask you a question, you will throw in examples and you will say, वो ज़्यादा बुरा बोलते हैं. So it is, कि ये ज़्यादा बुरा बोलते हैं, वो ज़्यादा बुरा बोलते हैं. If now I ask you that in the Aam Aadmi parties, in your Aam Aadmi Party's top body, how many women representatives are there? You will not have an answer to that. But I want to go back to nobody has a right to pass these misogynist comments. एक सेकंड दुष्यंत Huda, give me 30 seconds. I want to go back to दुष्यंत, मुझे ये बताइए, जब अजय राय एक बहुत सीनियर नेता है. एक सेकंड ना, स्मृति ईरानी पर पहले भी इस तरह अटैक हुआ है. आपको याद होगा संजय निरुपम ने क्या बोला था. मुझे ये बताइए, क्या संजय निरुपम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई कार्रवाई की? जवाब है नहीं. तो क्या आप अजय राय के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, व्यक्ति विशेष ने कब किसी ने क्या बोला, पहली बात तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्षमा. उन्होंने क्या शब्द बोला मुझे नहीं पता. आप महिला के अगेंस्ट कोई कमेंट पास नहीं कर सकते. लेट्स रिमेंबर दैट. दूसरी हम बात करेंगे एक राजनीतिक दल की, एक विचारधारा की. हम बात उनकी करेंगे. कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए 33% आरक्षण का नियम रखा, जिसको राज्यसभा में 33% रिजर्वेशन पर अटक गए हैं. अगर आपके किसी नेता में दुष्यंत इतनी कर्टसी नहीं है कि एक फेलो पॉलिटिशियन को आप कैसे एड्रेस करते हैं, उनको कैसे देखते हैं, यही तो दिक्कत है. ये असली खींच इस बात की है दुष्यंत कि उन्होंने राहुल गांधी को हराया है और 2024 में भी लगता नहीं कि राहुल गांधी वापस अमेठी जा पाएंगे. दुष्यंत, दिक्कत कहाँ पर है? हो रही हैं, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है राज्य में. अरे दुष्यंत, पॉइंट पे आइए ना, ये लेक्चर देने का टाइम नहीं है दुष्यंत. जी, मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपको माता बहनों के दर्द की बात कर रहा हूं. नौकरियां नहीं है, अरे आप माताओं बहनों का सम्मान करना तो सीखिए ना, फिर आप रिजर्वेशन मांगिएगा. और आप कौन होते हैं महिलाओं के बेसिस पे रिजर्वेशन मांगने वाले? आप मुझे ये बताइए, आप महिलाओं को इक्वल क्यों नहीं समझते हैं? आप मुझे बताइए, कितने जो मेल पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ ये कमेंट्स होते हैं? क्यों महिलाओं को टारगेट किया जाता है?
और एक ऐसी महिला, दुष्यंत, मैंने आपसे एक सवाल पूछा अमेठी को लेकर, आप उस सवाल को डक कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी 2024 में अमेठी से लड़ेंगे? देखिए, कौन नेता देश की दुष्यंत सीट से लड़ेगा ये व्यक्ति विशेष का निर्णय है। आज आप कह सकते हैं क्या कि नरेंद्र मोदी जी बनारस से ही लड़ेंगे? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता। ये डिसीजन अरे तो क्यों अजय राय ने ये कमेंट क्यों किया, आप मुझे ये बताइए। अगर आपको स्मृति ईरानी से दिक्कत नहीं है, और स्मृति ईरानी का मतलब तो वही नेता है ना जिन्होंने राहुल गांधी को डिफीट किया। किसी को नहीं लगता था कि वो राहुल गांधी को हरा सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी को सुभद्रा कुमारी ने हराया था। आप बताइए ऐसे क्या है? चलिए बहुत पीछे नहीं जाना पड़ेगा ना दुष्यंत। आप 2014, 2019 की बात कर ले, मैं आपसे 24 के बारे में पूछ रही हूँ दुष्यंत। बिल्कुल, मैं आप जवाब दूंगा। कोई जवाब है नहीं, प्लीज लेट मी कम इन एंड स्पीक। उन्होंने अभी बहुत टाइम बात कर लिया। यस प्लीज। उनके पास कोई जवाब तो है नहीं। प्लीज कैन आई से हम अगर सवाल कर रहे हैं नौकरियों की, महिलाओं के आरक्षण की, तो हमारे पास जवाब नहीं है। आप बताइए बहन जी। अभी आप भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में महिला आपके पास कोई जवाब है नहीं। आप महिला आरक्षण विधेयक जो महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा। दुष्यंत इतनी कर्टसी तो दिखाइए कि अगर एक फेलो पैनलिस्ट कुछ बोल रहा है उनको सुनिए प्लीज। दुष्यंत जी बोले, आपके पास कोई जवाब तो था नहीं। Yes, बहन बोले। If you have heard Mr. Rai's comments, his statements, what he has started with is he has spoken about this entitlement. ये जैसे संजय गांधी जी का सीट था, राजीव गांधी जी का सीट था, राहुल गांधी जी का सीट था. This is their family hierarchy. They know hereditary. That is the kind of an entitlement that they want to enjoy. So how dare one woman from another party, a non-Gandhi, come there and claim the seat with her own efforts, with her hard work? How dare she? Somebody who is a non-Gandhi, that too. In the Congress party, they talk about all these things like the first prime minister, first woman prime minister, etc., etc. But all this respect is only restricted to only those people from the Gandhi family or somebody who has some hereditary of political or royal history. That is all, that is a kind of entitlement. Only those women can enjoy some kind of a respect. The others can only make some statements like ladkiyon lad sakti ho, but then they have to be completely dependent on the men. That is a kind of a mindset that these people have, and that is exactly why they are not being pulled up by anybody in the leadership. Mrs. Priyanka Vadra should have come up and strongly rebutted. She should have strongly rebuked this person and said, how dare you talk like that? And this kind of reservation that they are asking about, क्या करिएगा आप इतना reservation लेके? अगर महिलाओं को जाके लटके छटके ही करने हैं, दिखाने हैं जाकर, तो फिर क्यों बनेंगे वो MP, MLA, minister? क्यों बनेंगे? You need to give the kind of respect. You need to respect the kind of work that they do. You need to understand that the development that is being done. You cannot say latke jhatke maar diya and then say like this. I did not say anything. I think you're taking men like Ajay Rai very seriously. You're taking men like Ajay Rai too seriously. They do not dignify this seriousness. Huda, before I come to you, I have to ask Dushyant this question today because he leans towards the Congress party. I have to ask him this. Dushyant, Priyanka Gandhi Vadra आज कहाँ है? आज उनको अपना स्लोगन याद नहीं आ रहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? आप लड़कियों को लड़ाएंगे, वो लोग नेता बनेंगी और उसके बाद आपके पार्टी के लोग इस तरह के कमेंट्स करेंगे। और सोचिए, ये एक यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ ये कमेंट करने की हिम्मत होती है कांग्रेस नेता की, तो आम पॉलिटिशियन के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, बहन ने सवाल उठाया वुमेन रिजर्वेशन का, इसीलिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही तो वुमेन रिजर्वेशन की जरूरत है। अधिक से अधिक महिलाएं सांसद होंगी, विधायक होंगी। अरे तो ये सशक्तिकरण ये अजय राय को नहीं पता क्या? समाज आप देखिए प्लीज ये मत करिए ना दुष्यंत, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको बार बार टोकना, लेकिन प्लीज आकर ना प्लैटिट्यूड से जिसको कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें मत करिए। मैंने आपको आपके ही पार्टी के एक नेता का बयान सुनाया है, आप मुझे ये बताइए कि आप उस कमेंट से अग्री नहीं करते? क्या प्रियंका गांधी उस कमेंट से अग्री करती है? अगर नहीं करती तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? फर्जी बातें अच्छी लगती है जब भाजपा के लोग फर्जी। अरे इसमें भाजपा और इसमें कांग्रेस की बात कैसे आ गई? इतना विकास हो गया,
अरे कहाँ विकास हुआ है? भाई साहब, कहीं आपकी विकास सब नहीं। कुछ एक मानसिकता है, बेरोजगारी आप दर बात कर रहे हैं। अरे आप छोड़िए ना, आपने तो पूरा सर्कल घूम लिया। आपको अजय राय और प्रियंका गांधी के बारे में बात करने से शर्म आ रही है। प्रियंका गांधी जी सरकार में नहीं है, प्रियंका गांधी जी विपक्ष में है, वो विपक्ष की नेत्री है, वो गरीब लोग। लेकिन अजय राय तो आप ही की पार्टी के नेता है ना, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से। किसानों की आवाज उठाती है। दीप्ति जी, आपको I think once and for all, अरे जो सत्ता पक्ष में है उनसे पूछिए महिला रिजर्वेशन कब होगा, महिलाओं को प्राइवेट। तो अजय राय तो आपकी पार्टी के ही नेता है ना, कांग्रेस के नेता है, या पार्टी छोड़ दी है उन्होंने? कब होगी? महिलाओं के लिए रोजगार कैसे उत्पन्न किए जाएंगे, महिलाओं को अत्यधिक लोन कैसे दिया जाएगा, उसकी बात। हिंदी में एक कहावत है ना दुष्यंत जी, इधर उधर की बात मत कर। नहीं आप वो मत करिए यहाँ बात कर रहा हूँ जी मैं। दुष्यंत, ये बढ़िया तरीका है। आप अपने स्पोक्स पर्सन भेजते हैं, आप कभी भी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, और आपको जब दोबारा सवाल पूछा जाएगा आप ये कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। I think once and for all. अरे आप महिला आरक्षण का राग अलाप रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अजय राय आपकी पार्टी के नेता है? Once and for all, we need to establish that women cannot be undergoing all these misogynistic, derogatory comments time and again. I mean, it is high time we establish some code of decorum, some code of conduct, wherein all these comments, be it from absolutely any party, Congress, BJP, Aam Aadmi Party, anybody who gives out a derogatory comment against a woman needs to be held accountable. But Huda, you will agree, and I have a list of people, I have a complete list of people who've made these comments. Right from the Congress to the BJP to the Trinamool Congress, the Samajwadi Party, the JDU, the list is long. And no one is willing to take an action, and that is the real problem. I still want to have Dushyant on the screen. I'll go to Sumitra also. Sumitra, we have to find a way out, because this cannot be normalized. Look at how Dushyant is responding. He does not want to take onus of what Ajay Rai has said. Priyanka Gandhi today is quiet, not even a tweet condemning this statement. देखिए किसी व्यक्ति विशेष के बयान पे हम कुछ नहीं कह सकते। दुष्यंत जी 1 मिनट बोलने दीजिए प्लीज। बयान लेंगे वो ना लेंगे वो उनके ऊपर। दुष्यंत जी 1 मिनट रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। जी मैं रुक गया बहन जी। जी धन्यवाद। See, Dipti, I think in the corporate world now people are rising up against such kind of sexist remarks or such kind of sexual harassment. In the same way, in politics also, since now we are finding more and more women joining politics, and to make the environment safe, I think we need to get some provisions here also. And first of all the political parties need to educate. I am using the word educate all their representatives and all their party men to respect women, because they are standing with them and they are. No, but why do you have to be educated about this? I don't understand. They have to be educated because. What is there about education? How can you speak like right this about anyone? We have these people who pass such comments. क्या आप लोगों को कोई अलग से कोर्स चाहिए? आपको ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह महिलाओं के बारे में बात करनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है, कि इस पर शिक्षा जरूरी है। एक भी बार अपोलॉजी नहीं दी है उनको कोई नहीं। आरक्षण इज अ डिफरेंट टॉपिक. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आरक्षण टुडे. मेरा बहन से प्रश्न है कि क्या महिला आरक्षण के बारे में समर्थन करती हैं या उसका विरोध करती हैं? देखिए महिला आरक्षण ये कम्प्लीटली अलग इशू है। आप इस डिबेट को लाभ घुमाने की कोशिश करें, लेकिन सबको ये समझ आ रहा है सुमित्रा, सबको ये समझ आ रहा है सुमित्रा कि ये इस इशू पर जवाब नहीं देना चाहते। नहीं सुमित्रा, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप, डू नॉट फॉल इन दैट ट्रैप। दुष्यंत, मेरा सवाल अजय राय पर है, प्रियंका गांधी पर है, और मुझे ये बताइए कि स्मृति ईरानी के लिए ये कहना कि लटके झटके देकर चली जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप आरक्षण होगा तब नेता अच्छी तरह बात करेंगे, तब तमीज से बात करेंगे। 33% बहनों को आरक्षण मिलना चाहिए। 33% लोग। अरे आरक्षण की बात से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। हम आरक्षण आपने ये कमेंट सुना है या नहीं सुना है? निश्चित होगी, समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। आप बताइए, आप दुष्यंत माफी तो मांग लीजिए सर। मैं किसी की महिला दुष्यंत माफी तो मांग लीजिए, प्रियंका गांधी की तरफ से माफी मांग लीजिए।
कि ये गलत कमेंट है और हम अजय राय जी से बात करेंगे? महिला माफी तो मांग लीजिए। कांग्रेस पार्टी का देश के बहुत बड़े वर्ग का महिला ये आरक्षण आपके में भरोसा संकुचित है। मानसिकता हम का महिला वर्णन आरक्षण कर रहा पास है। कराएंगे। आप क्या सोच रहे हैं 2024 में यही सरकार बता रहा है। बनेगी आपकी भारतीय पार्टी की जनता सोच पार्टी इतनी नीच है, यही समझ में आ रही है यहाँ पे। Huda Sariwala, why is it today that Dushyant is not even willing to apologize? The public spoke to Ajay Rai and Ajay Rai said there is no question of my apology. I mean, look Huda. at the tenor वो and the लोग tone घटिया that सोच these वाले लोग हैं, comments go जो महिला आरक्षण का unaccounted विरोध for. करने वाले Look at लोग। the tone that Ajay Rai, the audacity that he would go against. I mean, if he does not agree with the work that is done, or rather not done by Smriti Irani ji, there are other ways to condemn that. But you certainly cannot use derogatory, misogynistic remarks against a woman, period. And that too, a union minister. For the love of God, can we please understand? It is high time that women need to be looked up with respect, looked up with a certain, level of, dignity out here. For the love of God, can we please understand that it's high time? Every party needs to stand up and condemn this remark. You certainly cannot do that against a woman. You certainly cannot. This trend cannot go on. No condemnation. I would go a step forward, Huda Sariwala. We don't need condemnation. Not enough. You can't make a comment like this and get away with it. Sumitra, exactly what Dushyant is doing today. He says हम इस comment से agree नहीं करते. Personal capacity में ये comment दिया गया है. That's it. That's the end of the story for him. See, Mr. Rahul Gandhi is walking with women in the Bharat Jodo Yatra. What kind of message is coming by such comments from his party members? अरे ये महिला आरक्षण पर डिबेट नहीं है दुष्यंत। अगर आप आधे घंटे से डिबेट को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना दुष्यंत, लोग ये भी देख रहे हैं। आप आज अजय राय पर बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको शर्म आ रही है, आपको अफसोस हो रहा है, आप ये बोल दीजिए। आप सुमित्रा को पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। We need to wind up. Sumitra. About Mahila Arakshan, please can I answer him about I think Mr. Rai has to be sacked from the party. Quickly, please. Or at least 10 seconds each. Mr. Rai has to be sacked from the party for making such comments, or else somebody senior from the party has to take him to task. He has to be either suspended or sacked from the party with immediate effect. Agreed. And the balance is here. But will that happen? Dushyant, last the second. Dushyant अजय राय को कांग्रेस पार्टी से निकालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। स्मृति ईरानी जी इस्तीफा देंगी क्या? दुष्यंत आज तक महिला आरक्षण के समर्थन में किस बात के लिए? स्मृति ईरानी महिला आरक्षण का यही तो दिक्कत है ना, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलिए, स्मृति ईरानी को अटैक करते रहिए। आपकी सोच पे मुझे तरस आता है। और इसी से दुष्यंत ये साफ हो जाता है कि आपकी नीयत कहाँ है। ठीक है, we've run out of time. दुष्यंत, महिला आरक्षण का विरोध करने वाले दुष्यंत, इस समय माफी मांगनी चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा को इस नेता के कमेंट को लेकर जो उन्होंने नहीं किया। महिला आरक्षण का विरोध करने वालों के लिए चलिए ठीक है, आप एक्सपोज हो गए दुष्यंत। हमने बहुत कोशिश की कि आप कुछ कमेंट दें, लेकिन कोई बात नहीं, जनता सब देख रही है। I thank Dushyant and all ladies for joining us. We will keep tracking that story. There has to be action against Ajay Rai. Thank you all of you. I quickly toss to Shavan for taking ahead this edition of The Burning Question. Shavan. Well, in fact, an eviction drive that was completed in a record 8 hours, and that happened in the state of Assam. In fact, the opposition parties in the state of Assam has once again trained their guns at the Himanta government, essentially raising this question that whether at all Himanta government is doing this with some sort of an ulterior motive. The Assam government, which has been carrying out an ongoing drive to evict the encroachers on land that is belonging to the government or Vaishnavite Sataras. Today, the Assam saw a massive eviction operation completed in just about 8 hours. Now, this drive was in the state of Nagaon district, built as the largest in terms of the number of people affected, uprooting more than 7,000 encroachers. That was launched early morning amidst tight security, with a battalion of Assam police deployed to ward off possible opposition to the move. In fact, Republic was live as it happened. The question here is that, should this be politicized? And what exactly is wrong if the government essentially decides to free up the land of the encroachers? But it seems the problem is with the narrative that is being built by the opposition parties. Take a look at this report and then we debate.
few weeks back, we exposed a stinging reality that was brushed under the carpet by other media networks. The story of Assam, which faced massive encroachment menace, reports mentioned that around 7,504 bighas of lands belonging to 303 satraps of the state are under encroachment. Today, it is Republic impact that the Assam government walked the talk and launched a massive eviction drive in Nagaon. Many of them had already vacated the encroached land. However, there were 72 such structures which were not vacated, and today the demolition of such structures continue as this eviction drives is underway. The opposition, however, does not seem quite happy with this fact and has politicized the anti-encroachment drive. But what is it that is actually bothering the opposition? That's the burning question tonight. Joining us on the burning question tonight are Janki Kond, who's the spokesperson of the Assam BJP, and Mr. Champak Kalita, General Secretary and spokesperson of the AIDUF. Mr. Kalita, I want to start by asking you this question with regards to an encroachment drive that has started. And let's talk about percentage-wise, what really happened before the BJP government came to power. And the biggest grouse that the Assamese had with regards to how the encroachment was actually taken, and the fact that their own land was taken over. Forget about the political connections also, but the fact of the matter is that a lot of locals raised this entire question. Our own land and someone else comes and squatters. And we allowed that to happen for some sort of a political gain. Today, when the government essentially decides to go all out to ensure that this land is free of encroaches, it seems that once again, the same political class seems to be feeling completely unnerved. Mr. Kalita, that question was for you. जी आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, इसलिए मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ. बोलिए कलिता जी. जी, अभी देखिए कुछ चीजें तो है पीछे का है. आप इट इज ए ट्रेजेडी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल ट्रेजेडी है. बाकी जहां तक एआईयूडीएफ का स्टैंड है, अगर कोई जमीन किसी इंस्टीट्यूट, किसी को कोई भी गैर सरकारी सरकारी किसी के नाम पे अगर अलॉटेड है, उस जमीन पे अगर कोई है तो उसको वहां से जाना हो. लेकिन कोई हिंदुस्तानी शहरी जिसके पास जमीन नहीं है, जिसको आसामी में बोलता है भूमिहीन, लैंडलेस पीपल, अगर गवर्नमेंट लैंड पे बैठे हैं तो उसको वहां गवर्नमेंट उसको पट्टा देना चाहिए. और यहाँ आसाम में सरकार ने नया स्कीम लॉन्च किया है, धरित्री 2. तो ये जो लॉन्च किया है, तो इसमें आपका इनको अगर ये लोग एलिजिबल है, इनके पास लैंडलेस लोग है, तो इनको वहां सेटल करना चाहिए. और दूसरी बात, आज लास्ट 4, 5, 6 दिहाई में, दशक में, डिकेड में जमीन ब्रह्मपुत्र अपने में समेट लिया है इरोशन से. तो इसीलिए कुछ लोगों का पास में रिकॉर्ड में तो जमीन है, लेकिन वास्तव में हकीकत में जमीन नहीं है, क्योंकि वो इरोशन में चला गया. तो उन लोगों को आपने इंटरनल डिस्प्लेसमेंट सर्टिफिकेट भी देना चाहिए. ये एआईयूडीएफ का डिमांड है. बाकी जो अभी ये थिटूटिस फंड में अपना मैं आपको सीधा सवाल, कलिता जी, आपको सीधा सवाल जो करना चाहूंगा, आपसे एक सीधा सवाल करना चाहूंगा, बट इससे पहले जानकी, इफ आई कैन ब्रिंग यू इनटू द डिबेट. The sentiment of the original inhabitants of Assam, Ahoms, they've always raised this entire sentiment that their own land was taken away mercilessly
by a certain vote bank. And I'm not getting into the political parties. I'm not naming the political parties also. And we all know that. Everyone who's from Assam, I'm from a neighboring state of Assam. I can tell you this, the sentiment of the Ahoms have been neglected for the longest time. Today, when the government essentially takes the step of freeing the land, why is it that in Assam, a select political class goes completely silent, goes completely mum, because they feel at the end of the day, their vote bank is getting affected. But why should we shy away from the fact that the original inhabitants of Assam, they should be protected, their rights should be protected? See here, it is actually wrong to politicize the matter. Can you hear me? Yes, Janki, go ahead. I hope, yes, I hope I'm audible. See, the government of Assam has taken many positive steps after coming to power. And this definitely is one of the best steps that the government has taken, and that is to free the Hotra lands of encroachment. This has been also a long-standing demand of the indigenous people of Assam. The Hotra lands has been illegally and, as you said, mercilessly been occupied since a long time, many decades back. And it has been a continuous and rampant process. And unfortunately, in the previous 68 years of misrule in Assam, nobody, there was no response, there was no retaliation of any sort from any government. I'm talking about the previous governments. But when BJP came to power, this was one of our main poll promises, which was, you would know, and that it was of Jati Mati Bhetika Suraksha. So we had always been talking about this. When today this step has been taken, and because I will tell you that this is one of the primary difference between us and them. Us meaning BJP and them meaning the previous governments. They believed in politics of appeasement. They were always scared to touch this vote bank. They let them settle down continuously in these sacrosanct Satra lands, and there was never any retaliation, as I said before. But we believe in politics of justice. We believe in politics of development. We want to free these Satra lands of this kind of illegal encroachment, which has been continuously affecting, and where it has been a continuous process. And let me tell you, today, there was, under the guidance of our Honorable Chief Minister, a committee was appointed, a cabinet ranked committee was appointed to make an assessment of the land which is under encroachment, of Hotra land which is under encroachment. And they had made a startling revelation that around 7,400 bighas of Satra land is under encroachment in Assam. They had submitted an interim report. There they had stated this. And today the eviction has taken place roughly in about 333 acres of land. Roughly 300 acres of land. So this is just a minuscule. And we had, there had Janki. been a very, yes. Okay, you make your point, make your last point, and then I'll bring in Kalita Saab also. And I want to ask a very specific question to Kalita Saab as far as the Hotra lands are concerned. But as far as this assessment, the interim report that was basically made, what is it that the government is now indicating? What is it that the government wants to do? Because as far as today's eviction drive is concerned, that went off absolutely smoothly. And that goes on to indicate that there is a section, there is the support that is building for the government on the ground. And that is the reason why, when at one point in time you ever thought of carrying out any eviction in the state of Assam, it would lead to massive large-scale violence. Kalita Saab, आज आपको इतना तो मानना होगा कि कहीं ना कहीं सरकार को, हिमंत सरकार को कहीं ना कहीं एक तरह से जो आश्वासन उन्होंने दिया था, आज उस पर वो कायम रहे, और जिसके कारण
सवाल ये उठता है कि हॉथरोलैंड को लेकर आप लोग क्यों नहीं बात करना चाहते, इतने सालों से क्यों नहीं बात करना चाह रहे थे, आज आप इतने घबरा क्यों जाते हैं जब इस पूरे मामले को लेकर बात होती है? और इंडिजिनियस असमीज की अगर बात करें, उनके प्राइड के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने शायद शुरू में मेरा टेक में मैंने बोला, यूडीएफ का स्टैंड है, अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी किसी को भी अगर अलॉटेड है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, उस जमीन में अगर किसी ने एनक्रोच किया है तो उनको जाना पड़ेगा। उसमें हम लोग का कोई दो राय नहीं है, उसके साथ हम लोग हैं। लेकिन आज जो एविक्शन हुआ है ये सत्रह लैंड नहीं है, तो आप ये कलिता साहब एक सीधा हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। चलिए कलिता साहब एक हाँ ना में जवाब दे दीजिए मुझे, क्योंकि ताकि सब लोग आज जो असम में जितने लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा था कि आप इतने दिनों से क्यों नहीं बात कर रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि सरकारी लैंड के ऊपर अगर कोई एनक्रोचमेंट होता है तो एआईयूडीएफ इसकी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि नौगांव में जो हुआ है, आप चाहते हैं कि बाकी ऐसे जगह पे सरकारी लैंड पे अगर इंक्रोचमेंट हुआ आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। आप इतनी बड़ी टीवी हाउस का एंकर है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई गवर्नमेंट लैंड से जो कोई बहुत अच्छी तरह से समझ, चलिए आप समझा दीजिए, उनको नहीं हटाना चाहिए। अगर कोई एलोटेड लैंड है, 17 हो, 20 फार्म हो, एक्स मिलिट्री को अगर कोई उसको दिया है तो उसको आप हटाइए। और सबसे बड़ी बात, आपने एक चीज बोला, दो चीज बोला, एक बोला इंडिजिनियस, एक बोला आहूम। अगर आप आहूम बोलोगे तो मैं भी आहूम नहीं हूं, मैं चंपक कलिता हूं, और ये जानकी जी भी आहूम नहीं है, ये ब्राह्मण है। तो आप आहूम एंड नॉन आहूम में से आप इसको डिवाइड मत करिए। ये आहूम एंड नॉन आहूम का ये असम में ये इशू नहीं है, आज तक नहीं है। आप रिपब्लिक एक नया इशू मत लाइए, आहूम एंड नॉन आहूम इन असम। पता नहीं आप लोग का एजेंडा क्या है, और इंडिजिनियस कौन है ये कौन बताएगा? कुछ एजेंडा नहीं है कि इंडिजिनियस कौन है। आप रिपब्लिक ने, आप लोगों के पास इंडिजिनियस का डेफिनेशन है क्या? और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग इंडिजिनियस नहीं है, ये कौन बताएगा? ठीक है कलिता जी, आपने अपना पक्ष रख दिया, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। जानकी, do you want to take into consideration what Mr. Kalita says, and are you satisfied? Because he's essentially saying that he does not have a problem as long as you are not targeting the landless. Mr. Kalita is saying the government should not target the landless. But that becomes a little ambiguous. Mr. Kalita has that becomes again, Kalita साहब, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं और इस पे और गहराई पे जाता, क्योंकि कलिता जी आपको भी मैं कहूं कि बहुत दूर से नहीं हूं, जहां से असम से बहुत दूर नहीं, जहां से मैं खुद आता, तो मुझे हकीकत का पता है। जानकी, I just want to bring in one more aspect, because it's a very important issue. Unfortunately, not a single national media will ever talk about this. Will never talk about what's really happening in the state of Assam and why this becomes a very important issue. Perhaps this could also become a model for various other states. The pride of the indigenous. However, Kalita Saab says there is an agenda. There is no agenda. We don't work for any agenda. We are only talking about the well-being of the people of Assam. That's all. That is all there. Kalita Saab, अगर agenda की बात कर रहे थे, तो हमारे पास एक ही agenda है. रिपब्लिक टीवी की एक ही agenda है. लोगों की अच्छाई के लिए हम बात करते हैं. असम इस प्राइड की बात करते हैं. हम उसी की बात करें. जानकी, I want a final comment from you. Kalita Saab is saying, if you don't touch the landless, it's okay. We don't have full support is there for the government. What is it that you see a problem in the voice of the opposition in terms of this eviction drive? No, he said, voice of the opposition, this is not a uniform voice from the entire opposition. This is just a voice from a certain section of the opposition, firstly. Second thing is, he said that it is not Sotra land, it is government land. Yes, it is a mix of government land and Sotra land. Encroachment in both Sotra land and government land is illegal.
that I should remind him of, that encroachment. But the problem with them is that they want to patronize the encroachers. We look upon encroachers, we look upon these illegal settlers only as encroachers, whereas they look upon these illegal settlers as their vote bank. I told you about this earlier also. So it is only one section of the opposition which is getting disturbed by this entire eviction drive. Otherwise, the people, as I told you, the problem of encroachment is huge in Assam, and the state of Assam has been bleeding because of it. If you ask any native individual here, he is saying that I should not use the word indigenous. Okay, I will not use the word indigenous. Come and ask any native individual here. Do they like this illegal encroachment that has been happening in the state of Assam since so many decades, where the people, the actual natives are losing their land? The actual natives are losing their land to people who are of East Bengal origin. So whatever they claim, whatever they say, an encroacher is an encroacher. And today, this problem, this issue has been addressed upon in a very, very systematic and legal manner, because these people who have been encroached, who have been evicted today, had been given previous public notices from quite a long time. They have, announcements were going on public microphones regarding this eviction drive. Police personnel have been appointed so that this drive can be carried out very smoothly. And the government has been very vigilant about this drive this time. So where is the wrong? What is okay. wrong? Janki, I'm running short of time. Yes. Okay. Yes. So Janki, I'm very sorry Champa? to interrupt you. Very sorry to interrupt you. I'm running short of time. Kalita साहब, मेरे पास बहुत कम टाइम है. 10 सेकंड में अगर आपको कुछ कहना. जानकी जी ने कहा कि वो इंडिजिनियस की बात नहीं कर रही है, और बाकी ऐसे नेटिव्स की अगर बात करें तो उनके लिए भी मुश्किल होती है. आपको 10 सेकंड दे रहा हूं कलिता साहब, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है. आपको जो आखिरी कमेंट देना प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने नेटिव कहा. मैंने ये बोला कि इट इज ए ट्रेजेडी ऑफ एनक्रोचमेंट इज नाजायज. पोस्ट कॉलोनियल इरा. East Bengal, Dhaka was a capital of Assam in British era. इसीलिए जब हम लोग ब्रिटिश era में था तो ईस्ट बंगाल वाली बात आया कहां से आ गया? ईस्ट बंगाल का लोग है ही नहीं. अगर ईस्ट बंगाल का चलिए कलिता जी, लोग अभी हैं, जो बांग्लादेश अभी है, उनको आप भगाइए ना. आप उनको जेल में डालिए. आसाम से भगाइए. चलिए कलिता जी, इतना तो कह सकता हूँ. कलिता जी, चलिए आप ये एक ऐसा मुद्दा है. कलिता जी, ये एक ऐसा मुद्दा है. ये ऐसा एक मुद्दा है जिसे अब तक कोई बात करना नहीं चाह रहा था. रिपब्लिक टीवी अकेला एक ऐसा चैनल जो सवाल उठा रहा है. बट कलिता जी, आपको आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि कोई हमारा एक ही एजेंडा है. हमारा एजेंडा असमीज प्राइड को लेकर है, उनके राइट्स को लेकर है, तो हम उन सब के लिए बात करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद कलिता जी, एंड थैंक यू वेरी मच जानकी फॉर जॉइनिंग अस ऑन द बर्निंग क्वेश्चन. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है. समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे. ये तो अपनी जुबान है. जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए. विमल बोलो जुबान केसरी. Life will test you. It will turn your world upside down. Again and again and again. The only way to hit back is to stand up. Stand up every time and say, I'm not done. Hey, boss. Rahul, how come you're here? शाहरुख ने बताया. Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया. मैंने? Wait up. Booking a car service. Booking a service from here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं.
charging station for my electric car. Ah, found it. Really? How? Shahrukh ne bataya. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. Darling, you don't even have a Hyundai. Honey, that's exactly what I'm doing. Buying one. क्योंकि शाहरुख ने बताया. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharatiya Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. अगर मिठाई जंक फूड से है यारी, तो डायबिटीज की कर लो तैयारी। Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. ऑलराउंडर हम भी हैं। और तुम्हारा किचन? कभी स्टेन्स, कभी जर्म्स, तो कभी पानी। आपकी किचन और बाथरूम्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट SP100, टाइल जॉइंट का ऑलराउंडर। MYK लेटिक्रीट SP100, जोड़ हो तो ऐसा। Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. क्या हुआ रोहन? क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो। एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, NPS में। NPS में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। NPS कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना NPS अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। NPS में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Volkswagen Tygoon, India's safest SUVW. Volkswagen. एक दिन मैं सोते सोते गिर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है किसने किया? घोस्ट